Hello, hi Ankur, hi Meher. Let's wait for a few minutes for people to join. Can you guys hear my voice? Am I audible? Hello, Raghav. So, Raghav has also joined. माझं YouTube चालू आहे. Okay, Harsh has also joined. Hi, Harsh. So, we have some people joined already. कौन कौन है? मेहर, हर्ष, राघव, खुशवंत has also joined. मेरा इसमें आज थोड़ा लैग हो रहा है फिर से. जब भी YouTube पे लाइव आता हूँ मेरा इंटरनेट का कुछ तो प्रॉब्लम हो जाता है. Anyways, I will share my screen. Okay, can you guys hear me now? I have changed my network. I have switched my connection. Let's see. Am I audible now? हाँ, ओके ओके. सो पता नहीं, मतलब प्रीवियसली मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा था, कुछ रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, आप लोगों को सुनाई दिया कि नहीं, मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर. सो डू यू गाइस वांट मी टू रिपीट द थिंग्स और यू गॉट इट? शुड आई रिपीट? ओके. सो बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट अब भी जो हमारा काउंट है इट विल स्टिल बी इंटैक्ट फॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अभी जो मतलब वेव सी का जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इट विल कम डाउन इन एन इम्पल्स वेव. हाँ, ओके ओके मेहर, आई विल रिपीट. ओके. सो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ कि वेव सी में डिक्लाइन होगा, द वेव सी डिक्लाइन शुड बी एन इम्पल्सिव डिक्लाइन. तो that expectation, what now we are reaching at a point where we were expecting a wave 3 decline in this degree. So यहाँ पे 1 was quite clear, 2 was also quite convincing. ठीक है. बट यहाँ से इसके बाद यहाँ पे जाके जो इमीडिएट इतना बड़ा पुल बैक मिला है, दैट विल बी अवर लास्ट होप कि नाउ वी विल होप फॉर द लास्ट टाइम कि वेव 3 में डिक्लाइन होगा. मतलब दूसरे टाइप ऑफ डिक्लाइंस, करेक्टिव डिक्लाइंस आर ऑल पॉसिबल, बट द वेव 3 का जो हाई मोमेंटम का जो डिक्लाइन होगा उसके लिए नाउ वी आर गिविंग अ लास्ट चांस टू दिस काउंट. क्योंकि 1 2 1 2 1 2 ऐसे वेव 3 में यूजुअली इतने बार 1 2 1 2 1 2 नहीं होता. तो decline, most likely the direction of the trend is down only right now also. So but this count for now I will still keep it intact, but I will be now thinking of alternate possibilities in this decline ka count.
Now what are the alternate possibilities? The first possibility is ki we are forming a complex correction. This was an ABC, this became an A. Instead of A, this will become W. We got an X wave up in the form of zigzag ABC. This becomes X, and then the fall becomes a Y. Y के फॉर्म में फॉल होगा. That becomes one of the counts. अनदर काउंट जो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट मच रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंडिंग डायगोनल मिला, हमको ट्रायंगल भी मिला, ट्रायंगल का थ्रस्ट टारगेट भी कंप्लीट हुआ है. सो आई विल स्टिल कंटेस्ट कि हमारा बी फॉर्म हो गया है. मतलब ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज पॉसिबल कि बी कैन बी कॉल्ड एन एज एन अनऑर्थोडॉक्स टॉप. सो जो अनऑर्थोडॉक्स टॉप है दैट कैन इवन फर्दर गो अप. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इस लेवल पे सपोज अगर निफ्टी में टॉप बना है, लेट्स से 3 बना है, तो ऐसा नहीं है कि बी कैन नॉट फॉर्म अबाउट दिस. देयर आर प्लेंटी, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आर देयर कि बी हैज फॉर्म मच सिग्निफिकेंटली on a higher level to the actually orthodox top. This can be called the major top, much higher than the major top. So that or unorthodox top बनने का possibility has become significantly of a lower probability, and the reason is because of this ending diagonal and this triangle. सो ट्रायंगल के थ्रस्ट का भी टारगेट मीट हुआ है, एंडिंग डायगोनल का फॉल भी मतलब इंटेंसिवली आया है, एंडिंग डायगोनल का टारगेट भी मीट हुआ है, एंड देन वी आर सीइंग ऑल करेक्टिव राइजेस. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम C wave down, bigger C wave down, if we consider this entire correction, this was A, this was B. So the bigger C wave down is of the highest probability. This is the highest probability count. Sandeep Thakrar, please repeat. Okay, now you guys are getting me, right? Means now my audio is clear. My chart is visible to you all. So ये काउंट अभी तो फिलहाल हाई प्रोबेबिलिटी का है. अनदर सम ऑफ द की थिंग्स ओवर हियर टू मेंशन इज that this gap is still not filled yet. This was definitely not a runaway gap. This was definitely not a runaway gap. रनअवे गैप में कुछ भी प्राइस एक्शन इनसाइड नहीं आएगा, इस गैप के अंदर नहीं आएगा. दिस इज डेफिनेटली रनअवे गैप. A typical example of a runaway gap could be this gap over here. So you will see that in this gap you never saw any price action coming in between. So this is definitely not a runaway gap. So इस gap का this can be a breakaway gap or an isolation or an expansion exhaustion gap. So breakaway gap ka there are times when it gets partially filled and then the price goes up, but usually I will call this an exhaustion gap. So exhaustion gap, this gap is of high chance it might get filled. So far the view is still bearish. Whatever decline is happening, rise is happening is all corrective and declines are looking impulsive. तो फिलहाल के लिए अभी यही व्यू लेंगे. बैंक निफ्टी is also looking interesting. बैंक निफ्टी में वी आर मतलब जो राइज हो रहा है वो निफ्टी से ज्यादा हो रहा है, एंड जो फॉल हो रहा है वो निफ्टी से कम हो रहा है. तो मतलब bears are not enjoying trading bank nifty at this point of time, but bank nifty mein I will, this is all corrective, this is not impulsive, this is all corrective, and somewhere maybe B has formed or B will form somewhere in the coming time. But bank nifty is highly bearish for me at this point of time. All the banks also gave a significant rise in the last couple of months, and there has to be a pause anytime soon. मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता मार्केट में कि मतलब सब ऊपर जाते ही रहेगा एंड स्टॉक्स लाइक हेवी वेट स्टॉक्स लाइक मतलब जो निफ्टी के मेजर फॉर्मिंग स्टॉक्स है, एसबीआई ले लो, एचडीएफसी बैंक ले लो, इन सब में मतलब ऐसे तो वन साइडेड रैली फॉर मंथ्स एंड मंथ्स तो नहीं चलती रहेगी. व्हेन द अदर मेजर इंडाइसेस आर गोइंग डाउन, कि आईटी इंडाइसेस इज सो बेरिश एंड ऑल, उस टाइम पे I am expecting a correction in bank nifty. And interestingly, I will show you something interesting in this chart. Okay, it will not be visible for you all. Is this indicator? This indicator में I am seeing a clear divergence, a strong divergence on daily time frame. Sit. Okay.
So this indicator I have invented by my own. I have made some changes in RSI. I have developed new formula for the RSI, and then I have combined the concepts of Bollinger Bands and all, and I have applied it into this indicator, and it works amazing. So this indicator, my RSI has not picked the divergence. My indicator has picked a clear divergence on a daily time frame. Even on the hourly time frame, it has picked a clear divergence, and we were trading this. Matlab, I think right at this point of time, somewhere over here, I had shared my view uh, about Bank Nifty and Nifty, that they are looking bearish, and people traded this entire move. We all caught, and that was a great trade. Yesterday, if you guys remember, the 25,700 का जो पुट था निफ्टी में, that soar from 55 to 50 to 55 level से वो 320 330 तक गया. That is almost 7 times, 7x the move. 7x the move in a single day is crazy. मतलब कोई किसी ने अगर सिर्फ एक लॉट भी लिया होता, one lot of that was trading at around, मतलब उसका कॉस्ट रहेगा कुछ तो 8,000 के आसपास. So 8,000 rupees invested became 40,000 in a single day. Isn't it amazing? And I think Ankur booked the profit right at the bottom, correct? I think Nifty ka chart. I traded Bank Nifty. Ankur traded Nifty, and over here, I think right at this point of time, Ankur booked his profit. So that must be around almost 5x. I think the buying was done somewhere over here when I had shared it in my group. Yeah, I saw some divergences over here. And then over here, I created a position, but not in Nifty. I created position in Bank Nifty. That was almost at the exact top. And so far, मतलब अभी दिस चार्ट इज, तो अभी और कुछ डिस्कस नहीं कर सकते. मतलब मैंने ऑलरेडी जो व्यू दिया था, अभी तो फिलहाल वैसे ही चल रहा है. नाउ लेट्स सी. बट दिस विल बी द लास्ट 1-2-1-2 वाला जो हम सीक्वेंस कर रहे थे, दैट विल बी, दिस विल बी द लास्ट 1-2. आफ्टर दिस अगेन there is a 1 and then 2, then I will stop counting it as a wave 3. So that is, now this is the triple top formed in BPCL. बीपीसीएल का तो मतलब आई थिंक मैंने अभी वो चार्ट डिलीट कर दिया, बट आई थिंक आई हैड शेयर्ड बीपीसीएल का चार्ट इन माय ट्विटर अकाउंट, एंड मतलब वो आई थिंक टारगेट भी उधर ही रीच हो गया है, और नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल, एक्सपेक्टिंग अ वाटरफॉल डिक्लाइन. योर व्यू? नहीं, बीपीसीएल में नहीं खोलूंगा, वो मैंने काफी डिटेल में लेबल किया है चार्ट. वो लेट्स सी. मतलब अभी तो आई थिंक द अपसाइड टारगेट, आई थिंक इन बीपीसीएल इज डन. बीपीसीएल कैन कम डाउन. इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, वी कैन टॉक अबाउट दैट. निफ्टी का तो मतलब जो व्यू लास्ट टाइम मैंने दिया था, अभी फिलहाल तो वैसे ही चल रहा है. देयर इज नॉट मच चेंज. Only thing is that now I will be cautious if it comes down and then goes up in a zigzag manner and retraces again 0.618 near to 0.618, then I will be thinking of other possibilities. क्योंकि वेव 3 में मतलब ऐसा इतनी बार 1-2 नहीं होता. Defense stock. So let's say I will open a random defense stock. कौन सा ले? HL ले सकते हैं. डिफेंस स्टॉक, सी जो सबसे ज्यादा रिटेलर्स फेवरेट स्टॉक्स है और सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहते हैं, इट्स माय पर्सनल व्यू, आई अवॉइड देम. आई डोंट लाइक टू ट्रेड द हाईली स्पेक्युलेटिव एंड न्यूज बेस्ड स्टॉक, क्योंकि उसमें तो मतलब सबको फंसाने का ही काम चालू रहता है. तो आई थिंक दिस वाज बी एज फॉर्म्ड समवेयर ओवर हियर, एंड मे बी we are heading down in the C wave. So this is my view. Defense stocks are not ready to go up. They will consolidate for the coming 2 more years. I'm pretty sure. Defense stock will not give you big breakout in the at least 1 to 2 years में तो बड़ा breakout नहीं आने वाला है. It will be a sideways consolidation. I was expecting कि ये जो B बनेगा वो I think इधर कहीं पे तो बनेगा. This was my primary expectation. But वो इधर ही बन गया है. क्या ही कर सकते हैं. Dixon Tech is over. I think Sandeep Thakrar, you were part of my subscription during October or November, I think, if I'm not wrong.
तो Dixon का I think that time I had shared a clear view that it is looking bearish and it should reach somewhere over here I had shared. तो अभी तो फिलहाल the correction is not over. I think this view I had shared during हाँ नवंबर में. I think you were there in my group in November. तो नवंबर में आई थिंक आई हैड शेयर्ड कि देयर विल बी अ शार्प डिक्लाइन इन द फॉर्म ऑफ वेव सी ऑफ अ फ्लैट एंड दैट फ्लैट शुड रीच समवेयर ओवर हियर अराउंड 8900. तो अभी तो दिस इज ऑल करेक्टिव राइज. आई डोंट सी दिस इज नॉट एन इम्पल्सिव राइज. दिस इज नॉट एन इम्पल्सिव राइज. करेक्ट नो. यस. वेव 5 विल बी नहीं, वो कुछ कह नहीं सकते अभी तो, कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वेव 3 इज ओनली एक्सटेंडेड वेव 3 ना. तो वेव 3 के बाद वेव 5 एक्सटेंड होगा कि नहीं, दैट वी कैन नॉट से राइट नाउ. मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. राइट नाउ वी कैन नॉट क्लेम एनीथिंग. ओके, दीज आर मतलब मेजर. हमने क्या क्या आज क्या क्या कवर किया. हमने निफ्टी कवर किया, हमने बैंक निफ्टी कवर किया, एक डिफेंस स्टॉक ले लिया हमने, एचएल देख लिया, अभी डिक्सन भी देख लिया. एबीसी करेक्शन फॉर डिक्सन टेक इज ओवर. विच डिफेंस स्टॉक टू ट्रेड फ्रॉम एफएनओ. अभी एफएनओ का तो कैसा है कि मतलब लास्ट 1 वीक में जो कुछ एक्शन है उसके बेसिस पे यू डिसाइड. तो I have currently I am not actually I have not gone through defense stocks very thoroughly. I have none of the defense stock is in my radar right now, so I might not be able to answer that question immediately. Looks like wave 5 will be extended then Dixon. वो देखा जाएगा. Okay, anyways, if you guys have got my view about Nifty and the general view about the market, so we can wrap it up. If we can, I can take one more last question over here. अभी तो फिलहाल तो that is, so I cannot I will not be saying कि हाँ you short it here, short it there. मतलब that is not correct also from my part. I'm here just to give my view. Pulling the trigger is up to you. I will not claim anything कि yes you take a short position. मैंने caution signs का भी मतलब I have explained कि when we can think of being more cautious, that is when if this we can call it a minor one, this we can call it a minor 2 is maybe going on or has completed, and again if after that again if 1-2 happens, then there will be a caution sign. And for now I am expecting this gap to be filled because this was, to me, this is an exhaustion gap. This gap will be filled according to me. और जिस तरह से फॉल हो रहा है, इट इज लुकिंग लाइक इम्पल्सिव राइट नाउ. इट इज लुकिंग लाइक इम्पल्सिव. द राइज इज करेक्टिव. सो राइट नाउ आई एम स्टिल बेरिश. नहीं, मैंने नहीं किया है एनालाइज निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स. सो माय स्टाइल इज कि इफ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड माय ट्रेडिंग स्टाइल ऑन माय टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन ग्रुप एज वेल, कि आई डू नॉट बाय स्मॉल कैप्स. और मतलब उनमें मैं देखता भी नहीं हूँ. आई एम मेजरली ट्रेडिंग, my personal trades are majorly into large caps. Nifty 50 के stocks, Nifty 50 के stocks में I am using Elliott Wave with good efficiency. तो जब complete corrective pattern complete हो जाता है, I am trading small 10% 20% moves in small in Nifty 50 वाले stocks. So in my Twitter account I have shared views on major Nifty moving stocks like TCS का मैंने previously share किया था जब 2900 पे था. That time I had shared my chart on TCS on my Twitter. I am bullish on TCS. We got targets up to 3,300. So that is almost 12% excellent rise in a very safe Nifty 50 heavy index moving stock. फिर then Wipro का भी मैंने शेयर किया कि Wipro का we will get a 30% correction. We have already got around 25% correction since the time I made the post. तो मैं वैसे stocks में मतलब I try to find entries and exits. Small caps में I am not a big fan की मतलब वो स्टॉक्स ऐसा है कि अगर गिर गए एंड इफ द एनालिसिस गोज रॉन्ग, नो एनालिसिस इज 100% फुल प्रूफ. तो वो मतलब 70-80% भी गिर सकता है. वेयर एज निफ्टी मूविंग स्टॉक्स का करेक्शन मैक्स टू मैक्स 40% होगा, 50% होगा. ड्यूरिंग सम लेमन ब्रदर क्राइसिस कितना हुआ था, 70% हुआ था. तो then if the analysis goes wrong, the downside is still limited. And already मतलब जो सारे मेजर निफ्टी मूविंग स्टॉक्स है
from the all-time high of 2024. In the last 2 years, they have already corrected around 40%, 50%. हमारे पास कितने हैं? ITC है, TCS है, Wipro है, Infosys है. Already all these stocks have corrected more than around 40 to 50%. So why you want to? I would want to give much deeper thoughts on small caps. Alright, thank you so much, Pushman. So I am happy that you guys are getting more insights and find my analysis valuable for your trading. So do like, share, and subscribe to my channel, and do give your feedbacks and keep sharing your views and opinions in my Twitter handle as well. If those of you who haven't subscribed to my Twitter account or followed my Twitter account can do it. And if anybody is interested to join my Telegram subscription, he is most welcome. So I think we will wrap it up. Thank you so much. Got it. Thanks for sharing your insights. So I'm happy that you all joined, and keep supporting like this, and hopefully see you on next Friday. So good luck trading. I'm wrapping it up. Best to be guided on Nifty and Bank Nifty and the sector. Yes, sure. Today we had a quick overview of Nifty, Bank Nifty as well. In the next session also we will go through both the indices. I'm stopping the stream.